ये चीज आपके बुक में क्लैरिटी से नहीं दी गई है. एंड रिमेंबर दैट बायोलॉजी विदाउट डायग्राम्स इज लाइक अ डेड बायोलॉजी, राइट? सो ड्रॉ डायग्राम को. ठीक है, तो हम अब क्या कर रहे हैं, दैट इज पहले सुनना है फिर बनाना. ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस का क्या मतलब है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग स्टेम. अभी हम बात कर रहे हैं यंग स्टेम. अभी उस पर वुडी टिश्यू नहीं आया है, यंग सॉफ्ट स्टेम. ट्रांसवर्स सेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्स सेक्शन? बेटा यू मस्ट हैव सीन कि हम घर में कुकम्बर खीरा काटते हैं. खीरा काटते हैं तो इस तरह से है, और हम उसके इस तरह से स्लाइसेस काटते हैं. दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन, राइट एवरीबॉडी? जब हम उसके इस तरह से गोल स्लाइसेस काटते हैं, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन. इसी तरह हमने स्टेम लिया और उसके थिन थिन स्लाइसेस काटकर हम क्या कर रहे हैं, हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो वी विल डेफिनेटली यू नो इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर हमें मिलेगा. जब हमने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तब हमने क्या ऑब्जर्व किया, लेट्स सी दैट. ठीक है, इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर है, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा मींस इतना सा सेक्शन बना के दिखा रही हूं कि मुझे क्या लेयर्स मिली, राइट? इसलिए दैट्स व्हाई आई एम रबिंग इट. ये नहीं सोचना कि मैम ने यहाँ राउंड बनाया है और यहाँ ये चीज बना रही है. आई एम मैग्नीफाइंग दिस सेक्शन ओनली, राइट? सो this is the outermost, I'm sorry, this is epidermis. ये सेल्स है, सेल्स है ये जो बनाए हैं. दिस इज एपिडर्मिस. इसके बाहर सिर्फ अभी कुछ किसी ने नहीं बनाना, सीधे होके सिर्फ इधर देखना. सो इसके बाहर, so that plant does not lose much water, therefore there is a waxy layer. वो सेल्स की नहीं बनी है. There is a waxy layer. You know, wax repels water. Cuticle. This is called as cuticle. बिल्कुल ठीक है, this is cuticle. And in between, क्योंकि gaseous exchange तो होना है, respiration तो करनी है, right? So there are present this is stomata for gaseous exchange, right? Below cuticle, below epidermis. अगेन एपिडर्मिस किसकी बनी है, मैं सारा आपको बताऊंगी. एपिडर्मिस इज फॉर्म्ड ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स. बिलो दिस मैं ये पूरी नहीं बना रही, इट विल take lot of time, but there are thickenings at the corners. You can see that. ये आप मुझे बताएंगे बाद में कि ये कौन से सेल्स है. दिस इज हाइपोडर्मिस. thickenings at the corners. Then below hypodermis, there is present, cortex, parenchyma cells.
कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, lot of intercellular spaces, helps in storage of. This is all cortex. Then again parenchymatous cells. ये सारा parenchyma cells है. This is endodermis. But यहाँ पे cells tightly packed है some. Then below endodermis there is present pericycle. So यहाँ पे this pericycle, you can see that it is formed of very thick bones. Sclerenchyma cells. ठीक है, दिस इज sclerenchyma cell, दिस इज पेरिसाइकल. और बीच में पेरिसाइकल जो है कुछ पेरेन्काइमा की बनी है, कुछ sclerenchyma. This is again ये सारी. And below pericycle there are present vascular bundles. ये क्या है? वेस्कुलर बंडल्स. वेस्कुलर बंडल्स में सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है और बीच में केम्पिंग. ठीक है, अगर हम इधर देखेंगे, क्योंकि हमने पूरा सर्कल उधर नहीं बनाया, तो इधर अगर हम देखेंगे तो वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन ए रिंग, इस तरह से. तो वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन ए रिंग, राइट. और इनके बीच में क्या चीज प्रेजेंट है? इनके बीच में बस पेरेन्काइमा सेल्स है, बाकी कुछ नहीं है. मैक्सिमम टिश्यूज किसका है? पेरेन्काइमा, right? Again, come to this. I'm sorry, TS. TS आपको पता है, that is TS means transverse section. This is ये जो outer most है, this is cuticle, maxillary. This is epidermis, parenchyma cells, hypodermis, you know, thickenings at the corners, therefore parenchyma cells. This is, इधर देखो पहले, cortex, parenchyma cells, storage of food. This is
Endodermis, again parenchyma. Pericycle. And these are vascular bundles. Vascular bundle, each vascular bundle has xylem as well as phloem. Right? Draw it, label it. I will then tell you कि कौन सा पेरेंकाइमा, कौन सा कोलेंकाइमा, कौन सा स्क्लेरेंकाइमा. Write down, चाहे इसके साथ जगह है और you can write separately. The cuticle repels water. Cuticle, everybody write down. The question may come, what is the function of cuticle? Cuticle repels water and thus prevents loss of water. Thus prevents loss of water from the plant. The next is epidermis. Epidermis is the outermost protective layer of the plant. Epidermis is the outermost protective layer of the plant. And has stomata. कहाँ पे stomata present है? Epidermis में. And has stomata for gaseous exchange. And has stomata for gaseous exchange. Next is hypodermis. Hypodermis provides, कोलेनकाइमा का क्या काम था? That is flexibility and elasticity. ठीक है? So hypodermis provides elasticity and flexibility. Elasticity and flexibility to the young soft stem. To the young soft stem. Next is cortex. Cortex, endodermis. दोनों का इकट्ठा लिखेंगे. Cortex and endodermis. Storage of food. दोनों पेरेंकाइमेटस है. Storage, सिर्फ सेल्स की शेप में फर्क है. Storage of food. Then sclerenchyma. Sorry, not sclerenchyma, I'm sorry. Pericycle. Next is pericycle. Pericycle forms the bundle sheath. Pericycle forms the bundle sheath. और simple आपको पता होना चाहिए. They protect vascular bundles. Pericycle protects vascular bundles. Next है cambium. Vascular bundle has cambium flowing xylem. So cambium divides to form new cells. Cambium divides to form new cells. Which differentiates into xylem and phloem. Which differentiates. Cambium का क्या काम है? Divide करती है, नए cells बनाती है. That new cells differentiates to form xylem and phloem. And you know about xylem and phloem. Xylem ascent of sap, phloem conduction of food. ठीक, ये आपको पता है, ये हमने की. Next, this is the structure of young green stem. Then
द स्टेम बिकम्स वुडी, उसमें बार्क आ जाती है, उसमें कॉर्क आ जाती है, उसमें क्या होता है? नेक्स्ट आ जाइए, स्ट्रक्चर ऑफ वुडी स्टेम, स्ट्रक्चर ऑफ वुडी स्टेम. सो फर्स्ट इज, क्या हो रहा है पहले पॉइंट्स लिख लो फिर मैं बताती हूँ. फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर केम्बिया, which forms secondary xylem and phloem. सेकेंडरी वर्ड, क्योंकि अब क्या है, यंग की बात हम नहीं कर रहे हैं, दैट इज अब हम बात कर रहे हैं वुडी स्टेम की. प्राइमरी थी जो यंग थी, जब धीरे धीरे स्टेम बूढ़ी हो गई तो उसको सेकेंडरी स्टेम कर दिया, दैट इज सेकेंडरी स्टेम. सो उसमें क्या है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. Another is formation of cork cambia. By, देखो मैंने आपको टर्म बताई थी, डी डिफरेंशिएशन, दिस टर्म इज यूज्ड हियर, डी डिफरेंशिएशन ऑफ outer cortex layers, outer cortex layers. Write down these 2 points. Simple करके बताऊंगी. When if you take medical sciences later on, then you will do in detail, but I will do it here simple. So first is vascular cambium. It is formed by, vascular cambium is formed by, लिख लो, primary cambium and parenchyma cells. Vascular cambium, आप सिंपल लिखो, vascular cambium is formed by primary cambium, ज्यादा नहीं हम इस पे करते. Vascular cambium is formed by primary cambium. Primary तो पहले से पढ़ा हुआ, उसी ने फिर secondary xylem, secondary phloem बनाया, that is it. Now, what you will see here, next is formation of cork cambium. Outer layers of the cortex, ये क्या थी, this is you know, ये थी cortex. देखो अपने डायग्राम, इसकी जो आउटर लेयर्स है they de-differentiate and forms meristematic tissue. This is called as, थोड़ा सा मैं ऊपर करके बताऊं, outer layers they de-differentiate and forms
कॉर्क केम्बियम, यू नो, ये तो है ही है केम्बियम, सॉरी दिस इज कॉर्टेक्स, यू नो. The cells of these cambium, they divide. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, they divide. 9 थी बेटा, सीधा देखो पहले, बाद में लिखना, पहले देखो, फर्स्ट अंडरस्टैंड करो. Divide towards inner side as well as outer side. Towards inner side. This is cortex, but this is called as secondary cortex. Secondary growth है, whatever is formed, it is secondary cortex. Not different from primary cortex, but because it is formed by cork cambium, so secondary cortex. And towards outer side, many layers of thick-walled cells. Sclerenchyma cells नहीं है ये. Many layers of thick-walled, thick बनाए यहाँ पे. These are called as cork cells. ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी थिक वॉल्ड सेल्स बनाने. आई विल जूम इट, राइट, यहां पर भी. दिस इज कॉर्क. बट अगर थिक वॉल्स हो जाएंगी तो ऑक्सीजन कैसे अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आएगी. सो देयर आर प्रेजेंट सम thin walled cells also, and this structure is called as lenticell. बहुत छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है. Lenticels present in the cork, thin walled cells, helps in gaseous exchange, right? तो ये बनाना भी ठीक है, ज्यादा आपने नहीं बनाना. आपने कहां तक बनाना है, दैट इज कॉर्टेक्स के आगे बनाना है. आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है, ये मैंने आपको समझा दिया है, लिखवा दिया है, ये छोड़ दो, लीव इट. This you leave. You have to draw only this. This is primary cortex. This is secondary. ठीक है, पहले write down. Write down. The cells of the cork cambium. The cells of the cork cambium divides towards inner side as well as outer side. The cells of the secondary cambium divides towards inner side as well as outer side. Towards inner side, the cells differentiate. उन्होंने फिर specific function ले लिया. The cells differentiate to form secondary cortex. Towards outside, the new cells differentiates
differentiates into cork cells. Into cork cells. Cork cells become dead. Cork cells become dead and thick-walled. And become thick-walled. The walls have the deposition of suberin. Sclerenchyma में lignin होती है. Remember, the wall of the cork cells have the thickenings of suberin. S-U-B-E-R-I-N. Suberin. Next point, in between the cork cells, there are present thin-walled cells which form lenticels. Thin-walled cells that form lenticels. और फंक्शन ये 1 मार्क में आ जाता है. Lenticels help in gaseous exchange. Lenticels help in gaseous exchange. अब यहाँ पे स्टोमेटा नहीं है. और last point for today, the epidermis, cuticle, hypodermis. The epidermis, cuticle and hypodermis are sloughed off. Sloughed off means broken लिख लो. Are broken और sloughed off खत्म हो जाते हैं. In woody stem. Woody stem में ना cuticle है, ना epidermis है, ना hypodermis. Right? So this is for today. है ना, आपका टाइम भी हो गया है. And ये डायग्राम बनाओ, समझो. And this is all about your plant tissues, right? अपनी वर्कशीट करनी है because from Monday you will have your maths class. And then after that we will do, आपकी maths class के बाद उससे next week we will do animal tissues. Till then आपकी classes में भी खत्म हो जाएगा ये tissues, तो आपको जल्दी से समझ भी आ जाएगा. But सबसे पहले आज आपने जाकर प्लांट टिश्यूज की वर्कशीट कर. ठीक है, अब जल्दी से मुझे एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, वर्चुअल क्लासेस के रजिस्टर किस किस ने अलग लगा लिए? वेरी गुड. आई थिंक फ्यू स्टूडेंट्स ने अगर नहीं यू अलग लगाए हैं तो अलग लगा लो. राइट? एंड एवरीबडी हैज वर्कशीट. एक प्लास्टिक का फोल्डर रखो, उसमें वर्कशीट रखो, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट. कंसेप्चुअल भी इंपॉर्टेंट है और उसी में से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सो दिस इज फॉर ऑल. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक यू टीचर्स. वी विल मीट ऑन मंडे विद योर मैथ्स क्लास. जैसे हो जाता है आप वहां से बंद कर लीजिए.